Okay, so this is अक्टूबर नंबर 2025 पेपर 1 वेरिएंट 2 1 घंटा 15 मिनट में 40 एमसीक्यूज करने हैं जो कि 40 नंबर के हैं। कैलकुलेटर अलाउड है, पीरियोडिक टेबल गिवन है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, here we have what is the electron in boxes notation for the Fe3 plus ion। ये तो आसान है, हमने किया हुआ है। Fe होता है 26, यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन आ गए आर्गन में, देन 4s2 और 3d6। Fe2 प्लस बनता है जब ये 4s2 वाले दो इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, तो ये बनता है 3d6। और आयरन 2 प्लस ऑक्सीडाइज होकर आयरन 3 प्लस बनाता है। और वो इसलिए बनता है क्योंकि आखिरी जो डी ऑर्बिटल है उसके अंदर अगर हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होंगे तो दे आर मोर स्टेबल, तो दैट इज वाई ये इस तरह से करता है। तो 3d6 जो था दरअसल ऐसे था। 3d6 जो होगा दरअसल ऐसे होगा, है ना। 1 2 3 4 5 6। तो जो इलेक्ट्रॉन जाएगा बच्चों, वो इलेक्ट्रॉन वो वाला जाएगा जो कि पेयर बना हुआ है ना भाई। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो इट सीम्स लाइक दिस, है ना भाई। 4s खाली हो जाएगा, 4s तो गया बेचारा। अब 3d5 उस तरह से रह जाएगा। तो इस हिसाब से तो द राइट आंसर वुड बी डेफिनेटली डी। 4s से दो इलेक्ट्रॉन चले गए और 3d6 से एक इलेक्ट्रॉन चला गया। सही है भाई। Then they are asking for the next question. They are saying which equation has an energy change that is equal to the first ionization energy of bromine. Ionization energy क्या होती है? When the loss of electron from outer shell of the gaseous atom, 1 mole of the gaseous atom. तो bromine अगर इस तरह से होगा so you need to convert bromine into gaseous molecule first. Then this gaseous molecule should be converted into gaseous atom first, and then this gaseous atom when loses 1 electron to become bromine 1 plus gaseous, this would be ionization energy. Electron can be written first and after that as well। तो बीच में प्लस लिखा हुआ, आपकी मर्जी, आप इधर लिखे या इधर लिखे, बात होती है, कोई इशू नहीं है। So the right answer according to this situation would be A. First ionization equation is when 1 mole of any gaseous atom loses 1 electron to become monopositive. This is question number 3, and the question number 3 is saying the reaction of hydrogen sulfide with sulfur dioxide gives sulfur as one of the product. The two relevant redox equations are shown. How many moles of hydrogen sulfide are needed to react sulfur dioxide to produce 1 mole of sulfur? Okay. So before solving this, we need to equal the number of electrons. So this should be multiplied with 2, 2, 4, 4. And then we need to equate. Once we are going to equate this, they are going to give you what? 4 to 4 cancel, 4 to 4 cancel. दो हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्टिंग विद सल्फर डाइऑक्साइड to produce दो और एक 3 सल्फर along with दो वाटर मॉलिक्यूल। सही है। वो कह रहा है how many sulfide are going to be used to produce this। तो दो हाइड्रोजन सल्फाइड 3 सल्फर बनाते हैं। तो इफ यू वांट टू प्रोड्यूस 1 सल्फर, तो हाउ मच इट इज गोइंग टू बी यूज? ये गया इधर, ये गया इधर। It would be 3x is equals to 2 and x would be 2 by 3. So definitely the answer would be B. सही है भाई, yes answer होगा। Then which statement is correct? The relative atomic mass of chlorine is 35.5. This is average isotopic mass. The relative molecular mass of oxygen is 16. It is 16 into 2 will give you 32. The relative formula mass of calcium carbonate is 101. That is right. The relative isotopic mass of magnesium 24 is 24.3. It is 24 to 24 ही होगा ना, 24.3 तो नहीं, 24.3 is the average atomic mass of magnesium ना। So the right answer would be C definitely. Calcium is 40 plus sulfur 40.1, carbon is 12, oxygen is 16 into 3. So definitely it is going to give you 100 points. Then this one is the bonding between two atoms of nitrogen and two molecule involves the hybridization atomic orbital of sp orbital, which raw is correct.
Nitrogen or nitrogen form a single bond, and then along with their lone pairs, and then they form two pi bonds, right? Like this. So one pi bond or one lone pair and one bond pair is going to give you sp hybridized. They are going to be sp hybridized. So what they are asking, formation of the sigma bond between the nitrogen atoms. अच्छा देखें, whenever the hybridization is going to be done, and once you have done this, carry sp hybridized and all the orbitals having similar kind of energy. So this like this, नाइट्रोजन के पास यहाँ पर और यहाँ पर ऐसे इलेक्ट्रॉन है ना भाई। तो ये वाला है तो छोड़ ही दो, इसको तो दफा करो, लेकिन वंस दे आर बॉन्डेड तो दे ऑल हैव द सेम सॉर्ट ऑफ एनर्जी, सेम एनर्जी। तो नाउ वी विल कॉल देम sp hybridized। अब हम इसको sp hybridized बोलेंगे। So an sp orbital from one atom overlap with an sp orbital of other atom. This seems like right. And s orbital from one atom overlap with p orbital. This is wrong, definitely. So A or B can be the right answer. Type of orbitals which contain the lone pair of electrons on each nitrogen atom in N2. Type of orbital. This is also going to be considered as sp because I told you कि यार ये एक ही काउंट होंगे, ठीक है ना भाई। ये s और ये p अलग अलग काउंट नहीं होंगे। वंस द स्ट्रक्चर हैज बीन डन तो फिर ये एक ही काउंट होगा sp। और वैसे भी लोन पेयर s के पास है, p के पास तो है भी नहीं। तो जब ये एनर्जी सेम हो जाएगी तो दे आर गोइंग टू बी कंसीडर एज sp hybridized। So the right answer would be B. Six is also very easy question. They are asking for three bond angles are labeled as shown। ये पेपर में आ सकता है मुझे लगता है। What is the order of decreasing size of the bond angles x, y and z? दो बॉन्ड पर दो लोन पेयर 104.5, चार बॉन्ड है तो 109.5 डिग्री, तीन बॉन्ड है एक लोन पेयर है 107 डिग्री। So the decreasing level, the smallest one is definitely x, and the highest one would be definitely y. So the right answer for this MCQ would be C. Very simple, very straightforward. Then they are asking for this question, X and Y are different elements in period 3. Atom X and Y each have only one completely filled orbital in their highest occupied energy subshell. Y has a greater first ionization energy than X. Which row shows the structure and bonding of X and Y? So we need to write it in this way. Period 3 है तो सोडियम, मैग्नीशियम, अल्मोनियम, सिलिकॉन, phosphorus, sulfur, chlorine, argon. This is 11. So definitely this would be neon and 3s1. This is also neon. This is also neon. This is also neon. ये तो भाई सब में चलता रहेगा, तो छोड़ दो। This is 3s2. This is 3s2, 3p1. This is 3s2, 3p2. This is 3s2, 3p3, 3s2, 3p4, 3s2, 3p5, 3s2, 3p6. This seems like right like this, right? X and Y each have only one completely filled orbital. Completely filled orbital मुझे यहाँ नजर आ रहा है, and they are saying in their highest occupied subshell, है ना भाई। तो this is not, this is not, this is not। यहाँ एक नजर आ रहा है, यहाँ दो नजर आ रहे हैं, यहाँ तीन नजर आ रहे हैं। अगर आप इसको ड्रॉ करना चाहें तो आप ड्रॉ भी कर सकते हैं लाइक दिस। पी के अंदर तीन होते हैं ना भाई, तो एक दो तीन चार, इसके अंदर भी तीन होते हैं, एक दो तीन चार पाँच, इसके अंदर भी तीन होते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः। तो आप देखें यहाँ दो फील्ड हैं, दो फील्ड हैं, दो फील्ड हैं। यहाँ पर यानी कि तीन आपके पास पेयर हैं, यहाँ दो पेयर हैं, यहाँ एक पेयर है। दे आर सेइंग ओनली वन पेयर। तो इसका मतलब ये हो गया कि क्लोरीन और आर्गन भी गए, सिर्फ सल्फर बच रहा है मेरे पास, और मेरे पास मैग्नीशियम बच रहा है। ये दो बच, सही है ना। और फिर वो कह रहा है वाई हैज द ग्रेटेस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। ग्रेटेस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी
तो अक्रॉस द पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है भाई, इंक्रीज होती है। तो ये होगा y, ये होगा x, x would be giant metallic, y would be simple molecular, so the right answer would be B. गुड क्वेश्चन, मेहनत करवाई है काफी। A pure sample of a gas has a density of 2.62 grams and pressure is 101,000 pascals. Temperature is given. Ideally, under these conditions, which expression gives the MR? So PV is equals to nRT. We know this. PV is equals to mass over MR कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। And if we shift MR over there, so this would be, अच्छा वो बोल रहा है MR की एक्सप्रेशन पुट करनी है। So this would be mass over volume, pressure, or like this, and this would be density, RT over P, ये होना चाहिए भाई। और if I put the values over there, so density is 2.62 definitely, 8.314, temperature is 25 plus 273 298, pressure is 101,000. So what should be the right answer? Hmm. Mhm. What should be the right answer? वही ये क्या चीज है, वॉल्यूम, वॉल्यूम 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 वॉल्यूम, प्रेशर तो आ गया। सही तो है, क्या मसला है, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? ये 0.00001 001 क्या चीज है? 2.62 ऊपर आ गया, 8.314 यहाँ आ गया, 8.314 298 यहाँ आ गया, ये नीचे आ गया, ये व्हाट इज दिस? 0.001। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, राइट राइट, ये देखे ना, ये ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब है। तो डेसीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में जाने के लिए आपने कराना होता है डिवाइड बाय 1000 की पावर -3। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा उसने नीचे पुट किया हुआ तो उसने उसने पॉजिटिव में लिखा हुआ, ऑल राइट, एब्सोल्युटली राइट। तो डी वुड बी द राइट आंसर। वो नहीं देखा मैंने, वो किसी कन्वर्जन, ठीक है। फिर दे आर सेइंग व्हेन 0.47 grams of hydrocarbon is completely burned in air, the energy released is 200 grams of water, 23, what is the amount of energy absorbed? So Q is equals to mc delta T. M is 200 grams of water. C is 4.18. Temperature difference is 41 minus 23.7। कितना आएगा ये? आएगा आपके पास 17.3। तो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? 200, 200, 418 एंड 17.3। सी वुड बी द राइट आंसर। ये भी आसान है, ये तो काफी आसान है भाई। Or question number 10 is saying one commercially available heat pad contains iron, activated carbon, and water. The heat pad is activated by air. This causes the pad get hotter. Hotter means the reaction would be exothermic. ठीक है, which statement describe the chemical reaction occurring in the heat pad when it is exposed to air? So it is containing iron, and when it is exposing to air, this is going to be react with oxygen definitely, and they are going to form iron oxide surely. So heat energy is released. So this is exothermic reaction. So exothermic reaction, and iron gain electron, iron lost electron. This would be the right answer. ऑक्सीडेशन हुई होगी, जाहिर बात है, तो ये रिएक्शन है। सही है भाई। अब इन 10 क्वेश्चंस के अंदर अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो आप पहले पूछ लें। अच्छा मैं इन 10 क्वेश्चन की मार्किंग स्कीम भी चेक कर लेता हूँ जरा, इसकी मार्किंग स्कीम क्या कह रही है मेरे पास। पहले वाले का आंसर है डी ए बी सी सही है। फिर है बी और सी, बी और सी। सेवन का आंसर है बी डी सी, बी डी सी, एंड एब्सोल्युटली राइट। कुछ सवाल है आप लोगों का तो पूछ लीजिए, वरना फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। यस बच्चों, बोले कहा।
Assalamu sir, can you hear me? हाल का। Hello sir, बोलो can you बेटे। hear me? जी जी बोले। सर क्वेश्चन 5 में हमने बीस रखे, कैन यू एक्सप्लेन के sp ऑर्बिटल जो उसमें हम लोन पेयर के लिए जैसे रखे वो कैसे किए, लाइक पाई बॉन्ड sp ऑर्बिटल से कैसे बन रहा है? देखो पाई बॉन्ड तो एस पे है ना भाई। यस। पाई बॉन्ड तो एस पे है, अगर आप देखोगे तो ये वाला आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है, ये तो आपके पास आप पाए, ये जो है आपके पास, सॉरी ये हो गया आपके पास लोन पेयर। ठीक है ना, लोन पेयर के पास ये बनाएगा सिग्मा, ये बनाएगा पाए, ये बनाएगा पाए, है ना भाई, यही होगा ना सिचुएशन। यस सर। लेकिन आई टोल्ड यू कि जब हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है, जब आपके पास बॉन्डिंग हो जाती है, जब मॉलिक्यूल बन जाता है, तो फिर इन सब की एनर्जी सेम हो जाती है ना भाई। तो इसको आप सिर्फ एस और पी में काउंट नहीं कर सकते, आप इसको एस पी काउंट करोगे आप। दे आर ऑल हैविंग इक्वल एनर्जीज। सही। ओके, थैंक चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, और किसी का है तो पूछ लीजिए, वरना हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नो क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं।